All right. So, hello guys. Good afternoon. Good afternoon, everyone. All right. How are you guys? How are you guys doing? I am here only in front of you guys. How are you guys doing? कैसा चल रहा है? क्लास स्टार्ट हो गई. चलो. So, this is Tuesday and Tuesday हम लोग करते हैं vocab की बात. All right. So again, when we talk about the practicing part of vocabulary, we have come up with this session for you guys where we will be talking about the confusable things and also confusable words and also in the form of fill up the blanks. All right. So we have worked upon the same thing earlier. There we discussed a list of confusables. तो जनरली confusables जो थे हम लोगों ने वो काम किया था उसके ऊपर कुछ 100 के आसपास वर्ड्स थे वहां पर. ठीक है. जब हमने रूट्स पढ़ा था रूट्स के बाद फिर हमने confusables पे काम किया था. राइट. सो फ्रॉम देयर वी डिस्कस्ड कि भाई कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनको हम करेंगे या जिनको आप तैयार कर सकते हैं उसको हमने क्लास में डिस्कस किया था. टुडे व्हाट वी ऑल विल बी डूइंग इज कि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली उसको इन द फॉर्म ऑफ फिलर्स यूज करने वाले हैं और उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं. ओके. सो आई होप यू कैन read these sentences that are written here, these questions that are written here on the board. ठीक है. यहाँ पर आपके पास शीट में जो क्वेश्चंस हैं, so there are somewhere around 50 odd questions. हमें वो सारे क्वेश्चंस को आज खत्म करना है. ये हम टारगेट लेके चलेंगे एंड एज ऑलवेज विल ट्राई टू क्रैक इट. कल कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो जो हमारा लाइव था बीच में एंड हो गया. ठीक है. फिर बिकॉज वो उसमें ज्यादा टाइम लग गया हमें उसको अंडू करने में जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको रिज्यूम करने में. तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसको वहीं पर एंड किया. बट टुडे वी आई एट गेटिंग डन विद दिस. सो वी आर नाउ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग दी सेशंस प्रोडक्टिव रेदर देन मेकिंग दी सेशंस लेंथी. है ना. तो यदि आप बोलो कि वो पूरा का पूरा टास्क 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो हमारे पास मैराथन सेशंस भी होंगे. और मैराथन सेशंस में या जिस तरीके से सेशंस होते हैं जिसमें लंबे सेशंस हैं जिसमें हम पूरी एब्सोल्यूट प्रैक्टिस करने वाले हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं या जिनके एग्जामिनेशंस प्री बोर्ड्स चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं. सो उस वाले ड्यूरेशन के बाद हाँ बेटा एमएससीटी में भी ये चीजें आती हैं ज्योति. ठीक है. सो उस वाले ड्यूरेशन के बाद थोड़ा सा आप जैसे ही मेंटली और साइकोलॉजिकली वहां से थोड़े फ्री होगे तो हम लोग और ज्यादा डेलिबरेटली यहाँ पर चीजों को करेंगे और ज्यादा क्रिएटिविटी लेके आएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे सेशंस को ताकि फिर आप लोगों का जो भी एक फाइनल रन रहे वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहे और उसमें आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहो. राइट. सो डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है. रहना अग्रेसिव ही है और इसी अग्रेशन के साथ जाके वहां पर वो एग्जामिनेशन लिखना है फाइनल वाला और अपनी यूनिवर्सिटी जो हमें पसंद है वहां पर लैंड करना है डायरेक्टली जाके. ओके. चलो. सो वी हैव दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ 50 odd questions है. वी आर supposed to work upon those questions starting right from the basic. What we will do is we will solve the questions in a set of 5 5. ठीक है. तो 5 5 questions को हम specifically solve करेंगे. I'll give you time कि आप उसमें अपने choices जो हैं वो लिख सकें. So I specifically like suggest you guys कि I want to suggest you guys कि आप एक पेन और पेपर के साथ बैठे. Sit with a pen and a paper in your hands so that you can mark your responses there and you can check the responses accordingly. And also if you come across words जिनके meaning आपको नहीं पता और वो confusables में यहाँ पर through the questions आप लोगों के साथ discuss मैं कर रहा हूँ so आप लोग वो भी लिख पाए उनको भी आप jot down कर पाए. Alright. चलिए. So let's start with this. You have this set of the first 5 questions starting right from question number 1 till question number 5. You're supposed to work upon the first 5 questions. Okay. So please start doing it. I'm giving you 1 minute for this. है ना. 1 minute is way more than what is required. So इसमें आप यहाँ पर attempt कर लीजिए. After that we will discuss these questions. Okay.
Right. I hope you're done with the first set. First five questions, guys. Okay. So if I talk about the very first question here, the set of confusable or the pair of confusable that has come our way is piquant and pick. Okay. So when you talk about something that is piquant is something that is flavorsome, है ना? अभी जैसे होते हैं कोई चीज होती है insipid, insipid मतलब जो कि tasteless होती है. Opposite of that is something which is really colorful, for something that is fascinating, something that is flavorsome, ठीक है, something that is spicy. So ये जो फ्लेवर वाला जो बात हुआ जिसको हम डिशेस के लिए या मीट्स के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज पिक्वेंट. तो पिक्वेंट इज समथिंग दैट इज फ्लेवरसम. ऑलराइट, सो पिक्वेंट इज फ्लेवरसम. But on the other end, if you talk about pick, so this refers to two different things, है ना? Pick को आप simply ये भी बोल सकते हो, it is a kind of cloth, ठीक है? So जो clothes हम wear करते हैं, so ये pick silk यदि इस तरीके से देखोगे तो आप वहां पर एक टाइप ऑफ क्लोथ आ जाता है ना? जैसे आप फैब्रिक के बारे में यूज करते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक ऑल्सो. बट on the other end, you can use it differently as well. But when you can talk, when you say pick, so you are actually talking about a scenario where a person is irritated or a person is aroused. The anger is aroused, ठीक है? So the anger of that person is aroused. तो आप यदि किसी भी बंदे को irritate करने के लिए बोलोगे, so if you are irritating that person, so you are picking that. ठीक है. सो ये दो वर्ड्स जो थे ये हम लोगों ने देखे. अभी इसी नॉलेज के बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है दिमाग और देखना है कि हमारे रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं इनकरेक्ट इन क्वेश्चंस के लिए. सो द रेस्टोरेंट सर्व्स अ, अभी देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मील, ऑलराइट. सो जो कि डिलीशियस है आपने बोला, सो आप आउट ऑफ दीज टू थिंग्स, नो सेंस ऑफ इरिटेशन, नो सेंस ऑफ द अराउजल ऑफ एंगर, नो सेंस ऑफ एनीथिंग लाइक अ पीस ऑफ क्लॉथ और टाइप ऑफ क्लॉथ. सो यहाँ पर वो चीज नहीं आएगी, वो वाला वर्ड मीनिंग हमें नहीं चाहिए. इट मींस जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन इज गोना बी ए आगरा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए आगरा. ऑन द अदर एंड when you have a look at this expression grumpy, so something that is grumpy is grudgy. So वहां पर आप इरिटेशन वाले सेंस को ले सकते हो, कि वहां पर आप एंगर वाले सेंस को ले सकते हो. सो फॉर सेकंड क्वेश्चन द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज गोना बी B. Bombay. So we are done with the first two questions. First one is covered. Second one is covered. Move towards the third one. So Ivan order took falling out of the bed that morning as a portent or potent. Now potent is a word that refers to power. All right. So if a person is potent, potential, है ना? यदि हम इस तरीके से बात करते हैं तो वहां पर आता है पावरफुल. ठीक है. बट व्हाट इज अ पोर्टेंट? जैसे आप बोलते हो हार्बिंगर ऑफ डूम, दैट इज एन ईडियम. हार्बिंगर ऑफ डूम, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? हार्बिंगर ऑफ डूम. Now, when you say harbinger of doom, it is considered as ill omen, है ना? So it ill omen means what? It is a sign of something bad to happen. So आप बोलोगे that is the harbinger of doom, मतलब something bad is going to happen, है ना? तो जब आप वहां पर omen के बारे में बात करते हो, so omen is some sign. All right. So portent is that omen. All right. देखो, सो ओमेन मतलब दैट साइन, ठीक है. तो साइन ऑफ समथिंग, इल ओमन यदि बोल दोगे तो साइन ऑफ समथिंग बैड टू हैपन. उसी के लिए जो इडियम मैंने आपको बताया हर्बिंगर ऑफ डूम, वो होता है, ठीक है. सो इवन ऑर्डर टुक फॉलिंग आउट ऑफ द बेड दैट मॉर्निंग एज अ ब्लैंक ऑफ अ ग्रेटर डिजास्टर इन द फ्यूचर. सो यू आर टॉकिंग अबाउट सम साइन ऑफ बैड थिंग टू हैपन. सो इल ओमन के बारे में आप बात कर रहे हो. जैसे ही आप इल ओमन के बारे में बात करोगे, मैंने आपको वो एक और उसका इडियम भी बता दिया. हर्बिंगर ऑफ डूम, ठीक है. डूम्सडे होता है जैसे समथिंग बैड, हर्बिंगर ऑफ डूम. सो वो आपने एक साइन की तरह यूज किया. इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड हियर जो कि साइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आउट ऑफ पोर्टेंट एंड पोर्टेंट व्हिच वन इज गोना बी देयर? दिस ए आगरा. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज गोना बी ए आगरा. सो ए आगरा इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस. देन अर्नोल्ड वॉज, नाउ अर्नोल्ड के बारे में बात करो जो कि आपने देखा होगा वहां पर हॉलीवुड स्टार है, ठीक है.
अर्नोल्ड के बारे में बात करें यदि हम, तो अर्नोल्ड, उनका बिल्टअप अभी भी इतनी ज्यादा एज के बाद भी बड़ा पावरफुल व्यक्ति है वो। राइट, सो वहां पर आप पोटेंसी के बारे में बात कर रहे हो, वहां पर आप पावर के बारे में बात कर रहे हो, सो देयर पोटेंट विल नॉट प्ले एनी रोल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज गोना बी बॉम्बे, बिकॉज इट रीड्स अर्नोल्ड वाज अ blank man even at 70, so he was powerful. So correct answer option for question number 4 is B, Bombay. Preceded and proceeded. Now you are proceeding somewhere. You're proceeding मतलब you're going out. You are going out there. So I'm proceeding to the office. यदि इस तरीके से भी बोलोगे तो proceed is to act. All right. But at the same time, if you're talking about preceding, so you're coming. You are going somewhere and something is following. So you are preceding that thing. You're going first. All right. सो यू गोइंग अर्ली, यहां पर आप प्रिसीड करते हो चीजों को, ठीक है। सो गोइंग फर्स्ट यदि वो उस सेंस में आएगा तो प्रिसीडेड आएगा, और यदि एक्ट करने के सेंस में आएगा तो प्रोसीड आएगा। सो द फ्लावर गर्ल ब्लैंक द ब्राइड इन द प्रोसेशन डाउन द आयल। देखो उसने क्या बोला कि जब वो ब्राइड आ रही है तो ब्राइड के पहले फ्लावर लेके साथ में एक लड़की आ रही है, ठीक है। तो यदि वो उसके आगे चल रही है तो क्या बात होगी, आगे जाने के लिए प्रिसीडेड means the flower girl preceded the bride in the procession down the aisle. So correct answer option for question number 5 is gonna be A, Agra. I hope ये clear है। So starting right from question number 1 till question number 5, I hope सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के आए हो और सही आए हो। यदि नहीं आए हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि हमने कैसे मार्क करना है उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज को वहां पर करेक्टली। Right. So this one is for the first set of questions starting from 1 to question number 5. Now we will move further towards the next set of questions जो कि 6 से स्टार्ट होगा और चलेगा 10 तक। So we are solving the questions in a set of 5 5, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। 6 to 10 on your screen now. Question number 6 to question number 10. Attend till till 12. All right. That is after that we will change the page. Okay. तो ये एक पेज है यहाँ पर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो अटेम्प्ट नॉट टिल 10th वन बट टिल 12th वन, ठीक है। 12 तक कर लीजिए। ओके, डन।
ऑलराइट, चलो, लेट्स डिस्कस. So question number 6 here. The word pair is same. Preceded or proceeded, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने पहले ही दिमाग में कर लिए. हाँ, so question number 9 में there are two blanks. So in the first one, which one out of these two given options will come? ये आपको लिखना है. और second one में which one out of the given these two options will come? Alright, they can also be repetition. दोनों भी एक जैसे हो सकते हैं. Based upon the content, you will have to take a call. ठीक है, चलो. सो अभी हम 6 पे बात करते हैं. तो प्रिसीडेड एंड प्रोसीडेड, ये हमने एक क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी कर लिया इसका. सो बोथ द फ्लावर गर्ल एंड द ब्राइड, अभी वहां पर क्या था, उन्होंने बोला कि पहले फ्लावर गर्ल गई और फिर द ब्राइड फॉलोड. तो वहां पर इसी सेंस में हम लोगों ने क्या लगा था, प्रिसीडेड, है ना. बट ये दोनों के दोनों साथ में वहां पर एक्ट करते हुए जा रहे हैं, है ना. दे आर गोइंग देयर इन दे आर वॉकिंग थ्रू द आयल. तो अब यहां पर देख रहे हो, तो ये बोल रहा है बोथ द फ्लावर गर्ल एंड द ब्राइड blank down the aisle at the same time. So at the same time these two characters went there. So यहां पर आप फॉलो करने के सेंस में बात नहीं कर रहे हो, आप एक्ट करने के सेंस में बात कर रहे हो. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज गोना बी बॉम्बे. इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी बॉम्बे. देन मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7. Since the basic blank was wrong, all the conclusions based on it were wrong too. Now again another set, premise and premises. ठीक है ना. यदि हम बोलते हैं ना कॉलेज प्रेमाइस में, ऐसा नहीं होगा. कॉलेज प्रेमिस, यदि प्रेमाइसिस में बात करोगे आप, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग इन द एरिया दैट इज कवर्ड इन अ कैंपस. ऑलराइट, सो कॉलेज प्रेमाइसिस यदि आप बोलोगे, सो जो एरिया कवर्ड है, जो कॉलेज का पूरा अथॉरिटी है, वो कॉलेज के एरिया को आप बोलोगे प्रेमिसिस. तो ये तो एरिया के बारे में बात करेगा. ठीक है. दिस वन premise is something जो कि स्पेसिफिकली आप बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370 and 35A. On the basis of this, I can say he is the best Prime Minister India has ever had. So here in this situation, I am concluding something, and what is my conclusion here in this statement? Whatever I said, I've concluded something, and the conclusion was Narendra Modi is the best Prime Minister India has ever had. But on what data this particular conclusion is dependent here? मैंने किस बेसिस पर वो कंक्लूजन को ड्रॉ किया. उस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के पीछे का जो एविडेंस था, जो बेसिस था, जो फैक्ट था, वो ये था कि नरेंद्र मोदी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370 and 35A, which led to the situation where now Kashmir is the political part of our country. ऑलराइट, सो देखो हमने यहाँ पर पॉलिटिकली ऑल्सो वी हैव इंक्लूडेड दैट एज अ स्टेट. सो हमने क्या किया, वहां पर एक पर्टिकुलर फैक्ट और एविडेंस लिया, उस एविडेंस के बेसिस पर मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला. सो समथिंग अपॉन विच द कंक्लूजन रिलाइज, दैट डेटा, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रेमिस. सो दिस प्रेमिस इज द फैक्ट और एविडेंस. ये वो फैक्ट होता है या ये वो एविडेंस होता है जिसके ऊपर आपका कंक्लूजन रिलाई करता है. सो देखो यहां पर तो बात कंक्लूजन वाले की हो रही है. कंक्लूजन वाले की बात हो रही है तो आप स्ट्रक्चर की बात नहीं करोगे, आप एरिया के बारे में बात नहीं करोगे, आप सराउंडिंग के बारे में बात नहीं करोगे. सो यस, तो आप स्पेसिफिकली यहां पर बात करोगे किस चीज की, सिंस द बेसिक ब्लैंक वाज रॉन्ग. सो प्रेमिस, the fact, the information, because the information was flawed, the conclusion that was drawn upon the basis of that particular data was also flawed. So correct answer option for question number 7 is gonna be A, Agra. Moving further to question number 8. Question number 8, again the same set of confusables, but smoking is not allowed on the, मतलब now you're talking about the area कि ये particular area में, इस particular zone में, हमारे इस belonging या surrounding में smoking is not allowed. So you're talking about area means what? Correct answer option for question number 8 is gonna be B, Bombay. All right. Moving further to question number 9. The principal and principal, we have discussed this. Principal here is this refers to a rule, and this one is the head of the institution. This is actually a post. All right. So here the blank of the middle school is a women of blank. All right. Abhi dekho, the blank of the middle school. So here there is this requirement for some post to be written, because इस तरीके से आप उस women का introduction दे रहे हो. So post वाला जो principal है वो यहाँ आ जाएगा. But
वो जो वो बड़े नियम कायदे कानून वाली लेडी है, यहां पर हमें प्रिंसिपल एज अ पोस्ट नहीं चाहिए, एज अ डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। यहां पर हमें एज रूल ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब उसके इथिक्स और मोरल्स पे वो काम करने वाली लेडी है। तो यहां पर हम प्रिंसिपल द सेकंड वन विल बी यूज्ड। Alright, so this is the correct answer option for question number 9. In the first blank, we chose A and then B Bombay for the second blank. ठीक है? Question number 10 now. Profligate and prolific. Prolific mind. When you say he has a prolific mind, when you say he has a prolific mind, you actually say that that person is really creative. तो वो जो माइंड है उसका, वो बड़ा क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, तो प्रोलिफिक के लिए आप क्रिएटिव यूज कर सकते हो, आप इन्वेंटिव यूज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट प्रोफ्लिगेट, so profligate is a person who is prodigal. Prodigal मतलब spend thrift, ठीक है, extravagant. so ये बंदा बहुत ज्यादा spend thrift है। हमने ये वर्ड्स भी वहां पर देखे हैं, prodigal हम लोगों ने देखा है ना? तो वो spend thrift बोल सकते हो, wasteful बोल सकते हो। so profligate is wasteful, profligate is spendthrift, profligate is prodigal। ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो, और भी सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, सो एंजल इज ब्लैंक दैट शी स्पेंट द इंटायर $1,000,000 शी वॉन इन द लॉटरी इन 1 year। अब वो बोल रहे हैं कि यहां पर इसने बहुत ज्यादा खर्चा किया, तो वो क्रिएटिविटी में तो नहीं आ सकता, तो वो वहां पर आएगा किसमें? प्रोफ्लिगेट में, है ना? सो एंजल इज सो प्रोफ्लिगेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज गोना बी ए आगरा, प्रोफ्लिगेशन। ठीक है, सो यहां पे प्रोफ्लिगेट आ गया। 10th वन, 11th वन, जॉन ग्रीशम इज अ राइटर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट राइटर, अब ये वेस्टफुल या स्पेंथ्रिफ्ट या प्रोफ्लिगेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, या लाइक प्रोडिगल होने के बारे में बात नहीं हो रही है। यहां पर आप जो वर्ड यूज करोगे वो हो सकता है क्रिएटिविटी को लेकर। ठीक है, कि बहुत which two classes are held together? At the same time, is there any other class that is going on? Please do let me know about it. If there are two classes going on at the same time. All right. So John Grisham is a blank writer. So here you can say creative, prolific. So correct answer option for question number 11 is gonna be B Bombay. ठीक है? 12th. Dingwell didn't have sense enough to come in out of the। अब देखो, रेन तो ये आपका रेन हो गया, मतलब पानी गिरने वाला जो रेन हो गया। ठीक है, रीन ये रूल करने वाला रीन हो गया, है ना? सो द रूलर रीन ओवर द प्रोविंस, यदि इस तरीके से बोलोगे तो वहां पर रूल करने के लिए जो वर्ड आएगा वो ये रीन है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस रीन, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? नाउ रीन, इफ यू से जो हॉर्स हेड होता है, वो अभी उसको स्टेयर करने के लिए हॉर्स राइडर्स क्या करते हैं, वो जो स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जिसके थ्रू वो स्टीयर करते हैं, ठीक है, हॉर्स को, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं रीन। सो दैट इज द हॉर्स हेड में जो भी हम स्टेयर करने के लिए लगाते हैं, स्टीयर गेज, है ना, उसको हम रीन बोलते हैं। सो डिंगवेल डिडंट हैव सेंस इनफ टू कम इन आउट ऑफ दी। अब देखो, रीन स्टेयर करने के लिए यहां पर कोई भी सेंस नहीं आया, ठीक है, रीन यहां पर रूल करने के लिए कोई सेंस नहीं आया। सो द बेस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज गोना बी ए आगरा, है ना, दैट इज रेन। ठीक है, चलो, सो ये आपके पास 6 to 12, ये नेक्स्ट सेट आपका हो गया लगाम। हाँ, ये सेट आपका हो गया। यहां पर जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट के पास। ठीक है, नेक्स्ट सेट बोले तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, और 13 to 20 का सेट पहले लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे उसके डिस्कशन की। ऑलराइट, 13 to 20 का सेट लगाते हैं।
आई होप ये दिख रहा है आप लोगों को। 13 to 20 on your screen. 13 to 20 on your screen. Sorry. 'ओके चलो, आई होप यू गाइस आर डन विद दिस सेट. अब इसको डिस्कस करते हैं हम. यहाँ पर ये जब ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात करते हैं, ठीक है. ये रेन, ग्रीन एंड ग्रीन के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं. RAIN रेन के बारे में यदि बात करोगे, दैट इज रेनिंग वाला रेन, मीन्स वाटर वाला रेन, ठीक है. फिर यदि तुम बात करोगे REIGN रेन वाला रेन, ये आप रूलिंग के बारे में बात कर रहे हो, है ना, रूलर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है. किंग सिस्टम में या किंग रूलिंग में यदि आप चले जाओगे तो दे रीन ओवर द प्रोविंस, है ना. फिर आप REIN रीन के बारे में बात करोगे तो आपने ये स्टेयर करने के लिए बोला है, जो कि आप हॉर्स राइडर्स के बारे में या उस रेफरेंस में आप बात करते हो, ठीक है. यहाँ पर किंग किंग विल ब्लैंक विथ एन आयरन फिस्ट टू कीप पीस इन द लैंड, ठीक है. अब उसमें शांति रखने के लिए ही रूल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, ऑलराइट, विद एन आयरन फिस्ट, मतलब विथ पावर, ऑलराइट. ही वाज so bold, and with that boldness and that strong character he ruled there. वहां पर आपने रूल करने वाले सेंस को लिया. यदि आपने रूल करने वाला सेंस लिया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? रीन आना चाहिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज पी, बॉम्बे, है ना. मूव फर्दर. Question number 14. No matter how hard running guard pulled on the blank, the horse would not slow down. अभी आपने हॉर्स के स्टेयर करने के बारे में बात करी. उसको स्टेयर करने के बारे में यदि आप बात कर रहे हो तो आप यहां पर क्या रेन यूज करोगे? नो. क्या आप रेन यूज करोगे? नो. यू आर सपोज टू यूज सी कैलकाटा, रेन, है ना. दिस इज टू स्टेयर. करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज गोना बी सी कैलकाटा. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 15. The Amish will raise and raise. देखो, when you talk about RAZE, raise, ठीक है. This raise means to demolish something, demolish or to destroy, but that is to build, ठीक है. The Amish will destroy the walls of a building by noon भी हो सकता है, but यहां पर हमारे पास ये क्या बोल रहे हैं? The walls of the building by noon. यहाँ पर रेस बोल रहे हैं हम लोग, क्यों? Because पॉजिटिवली यहाँ पर कभी डिस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर जब हमें यहाँ कोई ऐसी चीज नेगेटिव दिखे तो हम इस नेगेटिव को चूज करें. यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन इज
Better choice would be A. Agra for question number 15. Question number 16, the school was blank and a new one built in its place. अभी दूसरा वाला बन गया उस जगह पर, तो अभी आप ये बोल सकते हो कि it was demolished. ठीक है, तो पहला वाला was destroyed and उसी की जगह पर दूसरा मिला. ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप रेज या रेज में से क्या यूज कर सकते हो? यहां पर आप डिस्ट्रॉयड या डिमोलिश वाला सेंस यूज कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 इज गोना बी बॉम्बे, बिकॉज रिप्लेस हुआ है वो बिल्डिंग. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 17, she could not tell the difference between blank and fantasy. When you talk about reality, it is about something that happens. This is reality. Alright, practicality. तो जब pragmatic approach की बात आप करते हो, तो आप ये बोलते हो कि हाइपोथिकेशन में बात नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकलिटी की बात करनी है. तो हम दुनिया आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता, हम यहाँ धरती पे रहते हैं, तो वो एक रियलिटी है. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट द अदर वर्ड दैट इज रियलिटी, सो ये रियलिटी के बारे में मतलब ये होगा कि प्रॉपर्टी. ठीक है, एक बंदे का जो बिलोंगिंग है, वो बिलोंगिंग जो होता है उसको अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो रियलिटी होगा. ठीक है, प्रॉपर्टी. अब देखो यहां पर आपने क्या बोला, शी कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड फैंटेसी. जैसे ही आप फैंटेसी की बात कर रहे हो, तो वैसे ही इसका अपोजिट वो क्या हुआ वहां पर, रियलिटी. सो आप यहां पर फर्स्ट रियलिटी यूज कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज गोना बी ए आगरा. यहां पर आप चूज करोगे ए आगरा. But if you talk about the second one, blank in large cities is markedly expensive. अब large cities में क्या reality expensive है, ये तो नहीं बोल सकते आप क्या बोलोगे यहाँ पर, property. तो property का sense यहाँ पर better suit कर रहे हैं, and that is why the correct answer option for this particular question would be reality. ठीक है, so B Bombay is going to be the correct answer for question number 18. Question number 19. Sylvia is undergoing a regiment or regimen. Now, there are two words. Regiment. Regiment को आपने देखा होगा किसी रेफरेंस में, और वो रेफरेंस यदि आपको याद हो तो आर्मी का होगा. आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, मतलब रेजिमेंट्स बोले तो यूनिट्स. ठीक है, सो ये वो यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. बट यदि आप रेजिमेंट के बारे में बात करोगे, सो रेजिमेंट इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज फॉर सम कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, सम solution, some approach. All right. So regimen here is used for course of action or some arrangement. ठीक है, a lot of times this, I mean, like if I have suffered a particular ailment and now I visited a doctor and he said कि भैया you are supposed to go out there and meet a nutrition. ठीक है, सो मैं न्यूट्रिशन के पास गया, तो न्यूट्रिशन ने मुझे बोला कि यार these are all the things, these are all the types of meals you can have, and these are all the things that you can understand are prohibited for you now. You are not supposed to have all these things. ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है. तो इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग माई सेल्फ, वो जो कोर्स ऑफ एक्शन मैंने डिसाइड किया, मेडिकल कोर्स ऑफ एक्शन मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन हैव, this is something that I can't have, and that list of do's and don'ts, that is some arrangement that I'll have to follow there in order to undo the negative after effects that have been caused by that ailment. Okay, so वो जो course of action या जो decisions होते हैं, मेडिकल वाला सेंस भी यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, तो हील करने के सेंस में भी आप उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए आप रेजिमेंट यूज कर सकते हो, एंड रेजिमेंट तो यूनिट इन द आर्मी, उसके लिए यूज किया जाता है. सो सिल्विया इज अंडरगोइंग अ ब्लैंक फॉर अ हेल्थियर लाइफस्टाइल. सो व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थियर लाइफस्टाइल, it might not be talking about, it must not be talking about the regiment or the unit, because undergoing a unit doesn't make sense. ठीक है, तो हमें यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, द फर्स्ट वन 19th करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आगरा, which says regimen. All right, the next one 20th, the last of this page. The army is made up of several now units, and there B Bombay fits in. तो correct answer option here for question number 20 is B Bombay. So ये हमारे पास ये वाला सेट खत्म होता है, starting right from question number 13 to question number 20. अभी क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट सेट. लेट्स सी कि उसमें हमारे कितने रिस्पॉन्सेस करेक्ट होते हैं. एक सिंपल सा फीडबैक के लिए मैं ये पूछ रहा हूं कि आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट करेक्ट? 21 to 28 on your screen now.
21 to 28. 21 to 28. Okay, that's great, Zara. ओके सो 21 टू 28। चलो करते हैं बात। सो क्वेश्चन नंबर 21, राइफल एंड रिफल, इन दोनों के बीच में फाइट है। देखो राइफल तो यू नो, राइफल इज अ गन, ठीक है। बट इफ यू वांट कि रिफल का मतलब आपको पता चले तो देख, रिफल इज टू फ्लिक समथिंग, ठीक है। सो इफ आई एम लाइक दिस आई विल फ्लिक इट, फ्लिक, है ना, फ्लिक शॉट खेलते हैं, है ना। सो दैट इज फ्लिक। टू फ्लिक, टू टर्न अराउंड, दैट इज फ्लिक, एंड दैट इज रिफल। बिल ब्लैंक द कार्ड डेक फॉर डीलिंग। अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपने गन तो यूज नहीं कर सकते हो वहां पर क्या होना चाहिए, रिफल ही होना चाहिए। मतलब ही रिफल्ड द कार्ड, सो रिफल, बी बॉम्बे वाला रिफल वुड बी द बेटर चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 21। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर राइट, राइट एंड WRITE, राइट, राइट तो ये लिखने वाला राइट हो गया, RIGST राइट ये करेक्ट वाला सही वाला राइट हो गया, और ह्यूमन राइट्स वो वाला राइट हो गया, ठीक है। देन दिस राइट इज रिचुअल, है ना। सो फाइनल राइट यदि बोलते हैं तो फाइनल सेरेमनी है, रिचुअल है, क्रिमेशन के बारे में यदि बात करो तो। सो फाइनल ब्लैंक फॉर द डिसीज्ड वर हेल्ड इन द चर्च। सो ये फाइनल राइट के बारे में बात कर रहा है, फाइनल रिचुअल के बारे में बात कर रहा है। तो यदि उसके फाइनल रिचुअल के बारे में बात करोगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए 22 का, बी बॉम्बे। Then sanguine and saturnine. One is positive, other one is negative. Sanguine is when a person is hopeful. आशावादी है भाई ये बंदा। ये बहुत चीजों को लेकर सैंग्विनेशन के बारे में मैंने बात करी थी। मैंने एक्स सैंग्विनेशन वाला जो वर्ड है वो भी डिस्कस किया आप लोगों से कि a person met with an accident and died of exsanguination. It means excessive loss of blood. That is exsanguination. All right. But when you talk about a person being saturnine, that is a person who is sad, a person who is gloomy, ठीक है। सो ये वो बंदा है जो कि बड़ा नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ सैटरनाइन, और नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ सैंग्विन, और नेगेटिव हुआ सैटरनाइन। अब अकॉर्डिंगली आपको जिस भी टोन का स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लेके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन अपने मार्क कर सकते हो। लाइक आई एम नॉट ब्लैंक अबाउट यूर गेटिंग दिस जॉब, ठीक है। अब आई डोंट नो, ठीक,
एक ये क्या बोलता है, उमा फॉल्स इनटू अ ब्लैंक मूड एवरी टाइम हर हस्बैंड हैडली गोज अवे ऑन बिजनेस, ठीक है। अब वो एक सैड वाले टोन में चले, सैड वाले मूड में चले जाती है। ये 24 को आप देखो, सो दैट इज नेगेटिव, सो दिस वन इज करेक्ट। अब आई एम नॉट सेटरनाइन बोलोगे तो सेटरनाइन इस तरीके से हो सकता है, सेड आई एम नॉट सेड अबाउट योर गेटिंग दिस जॉब, सो ये तो यहां पर किसी कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है, सो आई एम नॉट positive about you getting this job, so I doubt whether you'll get this job or not. So in that sense we can use a agra here in question number 23. So यहाँ पर जो word आ सकता है वो है sanguine, ठीक है, a person who is hopeful. So correct answer option for question number 23 is going to be a agra. But if we talk about question number 24, uma falls into a blank mood every time her husband hadley goes away on business. So saturnine means something that is sad or gloomy. तो यहां पर आप gloomy इस सेंस में बात कर सकते हो, ठीक है। सो नेगेटिव हुआ, और यहां पर आप लिख सकते हो सेटरनाइन, बिकॉज कभी भी उसका हस्बैंड यदि जा रहा है किसी टूर पे, सो दिस शी मिसेस हिम एंड दैट इज व्हाई द मूड is Saturnite. So correct answer option for this is gonna be B Bombay. 24 done. Question number 25. The blank of Letitia's dress ripped when she bent over. अभी हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, जो क्रीज है ना, जो हमारे शर्ट की क्रीज है, वो क्रीज बननी चाहिए। बट जो भी ज्वाइंट होता है, जैसे अभी यहाँ पर किसी भी इन दोनों क्लोथ्स के बीच में यदि ये ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को यू से सीम। आप बॉल भी देखोगे, क्रिकेट बॉल प्ले करते हो तो सीम, सीम मतलब जो वो दो पार्ट होते हैं वो आपस में जहां पर वो उन दोनों को सीव किया जाता है, साथ में जो जोड़ा जाता है, तो बीच का जो एक पर्टिकुलर लाइन आप देख पाते हो उसको आप बोलते हो सीम। बट वो कौन सा सीम होता है? वो सीम होता है SEAM, सीम इज दैट ज्वाइंट, ठीक है। सो दैट इज सीम, बट दिस सीम मीन्स इट लुक्स लाइक, राइट, इट सीम्स दैट शी इज हैप्पी, it seems this will do our job, it seems today is gonna be a very big day of my life. So ये हमारे लिए उस seem मतलब something that is known है ना, something that looks like, okay. सो द ब्लैंक ऑफ लटीजियास ड्रेस, जब ड्रेस बोलोगे तो इट डजंट लुक लाइक वाला सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, सो आप वहां पर सीम ऑफ अ ड्रेस के बारे में बात कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर 25 इज ए आगरा। Whereas if you talk about question number 26, Leticia blank unhappy, so it looks like वाला सेंस आ रहा है when that happened, so यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड यहाँ पर लगेगा and that would be seem, SEEM, Leticia seems, ऐसा आप यूज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26 बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 27, नील डाउन केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्लैंक बट रोज टू बिकम अ लैंडलॉर्ड। सो SURF सर्फ इज सर्फिंग वाला सर्फ, means you go out there in the beach, people like water diving होती है वहां पर, water surfing होती है वहां पर, तो surf is the waves वाला surf, all right, but SERF surf is a person who is a bondsman, bondsman मतलब slave और servant, ठीक है। अब इसने बोला है कि he later became a landlord but he come from a family of bondsmen, so ये यहां से contradiction बताएगा, he come from the family of people who were all were servants but he became landlord. So correct answer option for question number 27 is SERF serf. So correct answer option A Agra. But 28, the blank is up down at the beach. जब beach के बारे में बात करोगे, so there is no sense of servants, there is no sense of bondsmen. Here the correct answer option is gonna be B Bombay, which says SURF surf. All right, so this is B for question number 28. तो हम 28 तक आ गए हैं, अभी फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स टारगेट कि हम एक और सेट कर लें, लास्ट सेट फॉर द डे। 29 to 35 तक करते हैं, ठीक है, 29 to 35, 29 to 35।
Okay, so question number 29 here. यहाँ पर SHEAR shear is the first word. SHEER shear is the second word. Now when you say shear it up, SHEAR shear is to tear apart, है ना? When you break off something, when you tear apart something, so आप your something is torn, so that is teared apart, all right? So जब भी कोई चीज आप किसी चीज को जड़ से आप तोड़ रहे हो, so when you destroy that, या when you kill it, when you shear it, so SHEAR shear is to tear, break off, tear apart or break off. But shear is something that is absolute, something that is complete, utter, utter happiness बोलते हैं, जो extreme happiness, absolute happiness, that is sheer. ठीक है? So we blank sheep's wool in the spring and we blank the hedges in the summer. For question number 29. सो द फर्स्ट वन, शेयर करना है, मतलब अब यदि वूल के बारे में बात करोगे, सो विल से शेयर. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर वुड बी SHEAR शेयर. वी blank, we shear the sheep's wool in the spring and we blank the hedges in the summer. ठीक है? अभी देखो, अब एब्सोल्यूट करते हो hedges को, का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the term hedge? Shear is pure. Yes, Pragya, we can say that. जैसे मैंगर होता है, हमने जब एक ईडियम का क्लास किया था, तब हम लोगों ने बोला था कि एक ईडियम हम लोगों ने पढ़ा था, अ डॉग इन अ मैंगर. ठीक है? सो मैंगर इज समथिंग वेयर दैट इज अ क्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया, है ना? वहां पर वॉल्स होते हैं, आप किसी भी तरीके का बाउंड्री बाउंड्री आप लगा देते हो वहां पर. सो वो जो एक एरिया होता है जहां पर वी लीव द कैटल फॉर ग्रेजिंग, सॉरी, दैट इज दैट इज called a mango. ठीक है? So हमने बोला dog in a mango, so it reflects a person who can't let others enjoy something because he doesn't enjoy doing that thing himself. तो उसको वो चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी और को भी वो चीज नहीं करने देता है. सो वहां पर जो मैंगर निकल के आया ना, हाँ, वो जो मैंगर स्पेसिफिकली निकल के आया ना, दैट इज दैट एरिया. आप यदि बात करोगे फार्म्स पे, तो जहां पर आप उन चीजों को रखते हो, और जो बाउंड्रीज होती है वहां पर, उनको बोलते हैं hedges. राइट? हाँ हाँ, I'm cool. So we shear sheep's wool in the spring and we shear the hedges in the summer. When you shear the hedges in the summer, मतलब क्या? You strengthen those hedges. ठीक है? Because वहां पर कुछ किसी भी तरीके से यदि आप देखोगे कि वो बाउंड्रीज जो होती है, यदि आप उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में बात करोगे, उन हेजेस को स्ट्रेंथन करने के बारे में बात करोगे, आप उसको शार्प करने के बारे में बात करोगे, आप किसी चीज को इनलाइट करने के बारे में बात करोगे, इन दैट सेंस यू विल यूज दिस टर्म shear, because you're talking about you're strengthening it, you're that is the purest form of it. So sheer happiness मतलब extreme and pure happiness. Okay, so you share it. Question number 29. First blank correct answer option is A Agra. Second blank correct answer option is B Bombay. फिर आते हैं यहां पर. Felicity found the amusement park a blank pleasure. अभी फिर pleasure के बारे में बात किया. यदि pleasure के बारे में बात कर रहे हो, तो you will use sheer. SHEER sheer. So correct answer option here is B Bombay for question number 30. Question number 31. I need blank. अब देखो, यदि आप सम अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात करोगे, सो यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन, है ना? आई नीड सम टाइम. सो दिस सम हियर इज क्वांटिफायर, और यहां पर आप इसकी इसको टाइम के बारे में बात करो, तो सम टाइम, है ना? आई नीड अ फ्यू मिनट्स, तो सम टाइम इस सेंस में यूज करोगे आप. व्हेन यू से सम टाइम, आई विल सी यू सम टाइम सून. अब इस तरीके से यदि आपने बोला, तो आप सम टाइम दिस sometime, the second one वाला sometime you will use be Bombay. ठीक है? बट समटाइम्स दिस हैपेंस, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में एक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हो.
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल में एक फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हो, समटाइम्स दिस हैपेंस, ऐसे प्रेजेंट सिंपल आया है वो टेंस। सो आई नीड ब्लैंक टू थिंक अबाउट इट, अब इसको कुछ टाइम चाहिए ना, जब आप वहां पर कुछ टाइम मांग रहे हो तो वहां पर आपको सम और टाइम, ये दोनों दोनों एक्सप्रेशंस को अलग यूज करना पड़ेगा, तो 31 करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए। फिर 32 आई विल सी यू अराउंड सम टाइम, अभी यहां पर कुछ फ्यू मिनट्स या फ्यू किसी ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे इसलिए सम टाइम यूज नहीं करेंगे। यह यहां पर किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे इसलिए समटाइम्स नहीं यूज करेंगे। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, सम टाइम, तो कभी मिलते हैं, ऐसा। आप लोग भी मिलिए, कभी मिलते हैं, सम टाइम, भोपाल आए तो बी बॉम्बे। कैरन ब्लैंक ड्रिंक्स कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, अब देखो यहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल मिला, सी कैलकाटा, सम टाइम्स, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सी कैलकाटा इज गोना बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। अब 34, अभी एडल्टरी और एडल्टरेशन, एडल्टरेशन में आप वहां पर जैसे आप मिलावट बोलते हो ना, सो दिस इज एडल्टरेटेड मिल्क, है ना, तो वो करप्ट है ना, आपने उसको प्योर फॉर्म में नहीं किया, उसमें आपने किस चीज को मिलाया है, तो वो करप्ट फॉर्म ऑफ इट है, सो दैट इज एडल्टरेशन। बट एडल्टरी के बारे में यदि आप बात करोगे, सो ये एक्विजिशन होता है एडल्टरी का, कि यदि कोई एक रिलेशनशिप में कोई एक हस्बैंड एंड वाइफ है, फिर किसी का कुछ अफेयर हो गया, तो फिर वो बोलेंगे कि यार वहां पर वो एडल्टरी होगी, ठीक है, सो दैट इज एडल्टरी। Okay, so that is adultery. The owner of the milk dairy were charged with blank of milk. अभी आप मिल्क का एडल्ट्री कर रहे हो, सो वहां पर यू नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वो एडल्ट्री, दिस वन विल नॉट कम अंडर द प्ले। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, करप्ट करने पे उस चीज को, मिक्सचर है वो, है ना, सो आप यहाँ पर यूज करोगे एडल्टरेशन, adulteration. So correct answer option for 34th will be A Agra. And 35, her husband accused her of, now यहाँ adulteration नहीं होगा, because आप किसी substance के abuse के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप उधर relationship के बारे में बात कर रहे हो, तो correct answer option for this one is gonna be adultery. ठीक है, and that is B Bombay. So this is it for today's session. आज हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंफ्यूजिबल्स के करने की कोशिश करी। सो हमारा एक कल आरसी डे, मंडे, ट्यूसडे हमारे पास आया वोकैब डे, है ना, वेंसडे वी विल कम अप विद ग्रामर डे, थर्सडे इंग्लिश कंसेप्ट, सो दिस टाइम वी माइट टॉक अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच और समथिंग, ठीक है, देन फ्राइडे जो होगा वो मिसलेनियस प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक सेट होगा, है ना, और उस सेट को हम लगाएंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ऑलराइट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 2 p.m. बाय बाय। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत सारा प्रसन्न रहें। बाय गाइस।